self कहूंगी, soul कहूंगी, inside the divine that you have. Get in touch with that. They come and do whatever they feel like. They like हम राजा हैं यहाँ के. I think pause बहुत important होता है. बच्चों को EQ क्लासेस में भी यही सिखाते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो 10 सेकंड काउंट करो, 10 सेकंड्स काउंट करो. हम ना अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. Right now, if we are recording this podcast too, with practice, what will happen? Those 5 seconds will get reduced to 1 second. What are some key elements of a healthy and conscious relationship? The only thing that stood our relationship was the trust and the communication. As you grow, relationship भी grow होता है. Yeah. Same तो नहीं रहता. And because you are also changing. आप 5 साल पहले कैसे थे, आज अलग हो. आजकल टेक्स्ट पे ब्रेकअप्स हो जाते हैं. हमारे टाइम में तो हम लेटर लिखते थे. खुशी is not the goal. The goal is to enjoy life. Emotional intelligence is not about regulating our emotions. Once you understand others' emotions, you'll automatically regulate your emotions. Yes. It's all about how you want to apply that intelligence. We are revolving around those expectations, that what that power is giving us. Yeah. Right? People say you should not expect. Yeah. But I also feel that expectations are also required. I have a different view that अगर हम balance में ही रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? We stop victimizing ourselves. Yeah. Or stop blaming others for everything happening in your own life. Healthy relationship, I feel, is that space where you create your life. Like create your environment, basically. Create your environment. What exactly is one advice which you want to give for all the women out there who are making significant career changes, or they're entering into new phases of their lives, such as motherhood, or they're getting married, or कहीं college में admission हो रहा है, whatever is happening, right? Husband का transfer हो रहा है. Anything can happen because women तो पीछे पीछे चल जाती है, right? That's expected out of them. Nobody thinks about their career role, and I'm sure this would get resonated with many of the women out there. So I would like to know from you, like how one can stay resilient and adaptable during all these major life transitions which happens with everyone. I think majority of the women faces this issue, so I would like you to address this particular thing too. A lot of women these days are choosing to go back to work and managing their life with other facilities, जैसे डे केयर है. आजकल इंडिया में थोड़ा सा बेटर हो गया ये सिस्टम. मेड्स हैं, इन-लॉज के साथ आप रहते हैं तो वो ध्यान रख लेते हैं. तो एक तो ये होता है कि मदर्स चाहे 6 महीने या 1 साल whatever time they have with for themselves उतना टाइम स्पेंड किया और आगे बढ़े. कई लोग नहीं और कई लोग छोड़ देते हैं. There are data which shows that I think more than 50% of the women do not join back the force after having a baby. So because इनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, चाहे फाइनेंशियल हो या फैमिली का हो. But strategy, I think they're trying their best to be independent. At least these days, I'm seeing ladies are trying to be more independent, are aware also. कोई ना कोई yoga या meditation कुछ कर रहे हैं. But majority of the ladies do not have that also. तो उनका ध्यान कहाँ जाता है? तो उनका ध्यान जाता है कि यार let's go out, do something. कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ या मंदिर चले गए, जो रिलीजियस हैं वो मंदिर चले गए. कहीं ना कहीं अपने मन को शांत करने के लिए जो चीज उनको मिलती है वो कर लेते हैं. बट रूट कॉज पे कोई नहीं काम करता. रूट कॉज है कि आप ये हो ही क्यों रहा है और क्या चाहिए आपको. और कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं हमारे बहुत. सो हमें नहीं पता है, वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है. कई बार आपको नहीं पता आप क्या कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो दिमाग में अज्यूम हो जाता है कि हाँ बोल दिया. बट मैक्सिमम टाइम
I think we should work on their communication with their husband, with their parents, in laws, because I found that communication, say, not just say whatever it comes to your mind, but politely have a conversation with everyone. Tell them what you really feel. आप अपनी नीड्स नहीं बताओगे तो किसी सामने वाले को क्यों कैसे पता चलेगा? वो तो अज्यूम करके चल रहे हैं कि नहीं होगी, पता ही नहीं, उनकी भी तो अवेयरनेस में कुछ नहीं है. Correct. हम ये सोचते नहीं है कि सामने वाला इतना नहीं सोचता, सब अपने बारे में ही सोचते हैं ना, कोई किसी के लिए नहीं सोचता है. सो वी हैव टू थिंक एंड कम्युनिकेट. I think that is the most important thing. And prioritize ourselves also. As a woman, we've only learned and conditioned to be selfless. Especially माँ बनने के बाद तो सब आप दूसरों के लिए करो, अपने बच्चे के लिए करो, बच्चे के लिए इतना हम पागल हो जाते हैं कि we do forget ourselves. So somewhere we have to get in touch with that self जो है हमारा personal self कहूंगी, soul कहूंगी, inside the divine that you have. Get in touch with that. And then make a choice what you want to do. I'm not saying that you should go back to work or you should just take care of the children. It's a choice. आपकी choice होनी चाहिए कि आपको जरूरत है या नहीं है. So challenges overcome करने के लिए what we need to do is self expression. कि पहले तो आप communicate अपनी feelings करना सीखिए, जो भी feelings है, because बातचीत से ही हल निकलते हैं किसी भी चीज की. When we are talking, when we are expressing, universe के अंदर sound जा रहा है. We are producing those sounds and everything is vibration. That's a sound only, right? So in my frequencies world, so I teach vibrations, like how to control your vibrations, how to master your vibrations. Actually, you need to create your vibrations, that aura, which we say. And basis that only you will create whatever you want to in your life, actually. Right? So, जो भी self awareness की अपन self expression की आपने बात करी कि कम्युनिकेट करना सीखिए, अपना सेल्फ एक्सप्रेशन जब आएगा तो इमोशंस जब आपके अच्छे रहते हैं तो you'll feel happier, you'll feel lighter from inside. So it's a choice which you said that, but self reflection करना जरूरी है that you want that choice or not. हाँ, I think that reflection is required. Strategies तो ऐसी कोई full proof strategies नहीं है, but this is from what I've experienced. Yeah. That So I it's a think journey, it's a journey. day-to-day journey. There's nothing a destiny that will see. It's like कि आज तो आपने आइंस्टाइन की जैसे काम कर लिया, राइट? कल को वो मेमोरी नहीं रही, फिर क्या करेंगे, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट द जर्नी कि हाँ आप कब तक वो काम कर सकते हैं. बिल्कुल. That's how we evolve in life. So, okay. So thank you so much for answering this question. I'm sure all the women who are watching out here, and even the men who are watching out here, they would understand that this is a serious, deep issue, which has been from generations, which has been passed on to us, right? But we are mature enough to understand everything, right? As a generation, we have seen a lot of generations. We have studied a lot. History में इतना सब कुछ हो चुका है. इतने लोगों ने अपने पे राज कर चुके हैं, इतने लोग अपने ऊपर मतलब सोच के देखो, वी हैव बीन थ्रू मल्टीपल थिंग्स. नाउ इज द टाइम, आई थिंक नाउ इज द टाइम. जैसे वो लोग सोचते थे ना, नाउ इज द टाइम, फ्रीडम फाइटर्स, दिस इज द टाइम. वी नीड टू थिंक लाइक देम, अदरवाइज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी नहीं आ पाएगा. Okay, so third question which I have from this part, so we have three sections, Madhulika ji, as I mentioned that, so this is the third question of the first section only. Yeah, how does improving emotional intelligence help in managing our relationships and personal well-being? You mentioned about self-care, right? So how does emotional intelligence, which we are talking about, that how to gain that emotional intelligence, right? So can you provide some practical tips like for cultivating those emotional intelligence in our day-to-day lives, like for all the women out there, even for the men, because your message is actually going to the men's too, right? Because they need to understand, they need to provide that support system. It's women, obviously they have to give that self-reflection, but it's for the men, I would say.
Yes, So I yes, would like to absolutely. know from you, like how inculcating those emotional intelligence habits in day-to-day lives, how we can do that. Actually, you're right. Emotional intelligence is required for both. Yeah, And even in when men understand the women well, I think yeah, they can give a better environment for them to grow also. So emotional intelligence, uh, बेसिकली आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं दैट इट्स रिक्वायर्ड, इम्पोर्टेंट है। आजकल काफी रिसर्चेस भी निकल के आ रही हैं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। इट इज correct. इम्पोर्टेंट बिकॉज सम इट मेक्स अस make better choices in life, better decisions in life, Hmm. handle relationships better. And everything is related, everything has a relationship. Yeah, Like मेरा टाइम के साथ भी एक रिलेशनशिप, मेरा हर दूसरा इंसान तो है ही, उसके साथ रिलेशनशिप है कि मेरे रिलेशनशिप मेरा खुद के साथ भी है। सो एक रिलेशनशिप में इमोशंस भी आते हैं, correct. and you understand emotions can make you do anything. If you're extremely happy, extremely sad, decisions made in those times are not so great for you. So emotions अगर आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं तो हम उससे उससे रिस्पॉन्स ना दें, रिएक्ट ना करें, सॉरी, बिकॉज रिएक्शन इज ऑलवेज not well thought of. Yeah, Reaction is always based on past experiences. correct. That's how our brain works. And हमारी रिस्पॉन्स तब आता है जब हम स्टार्ट करते हैं ये समझना कि अच्छा मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों, क्या इम्पैक्ट क्या है इसका। इम्पैक्ट ठीक है, समझ आया, बट एग्जैक्टली क्यों आ रहा है, मैं कौन सी अपनी एक बिहेवियर है जिसकी वजह से वो आ रहा है। दैट इज, इट मे बी समथिंग लाइक a dominant personality. You want to dominate other people. कई लोगों की होती है तो वो चिल्ला के बात करते हैं या गुस्सा करते हैं, and they want to be heard by everyone. Yeah, So anything can trigger them. So once we understand those things, triggers, तो हमारी रिलेशनशिप में बहुत फर्क आता है, बिकॉज हम रिस्पॉन्स करना डिफरेंट कर देते हैं, हमारा टोन अलग हो जाती है। जैसे ही वो टोन अलग होती है और आप पोलाइट होते हो थोड़ा सा, पीपल ऑल्सो सी दैट, hmm, दे रिएक्ट इन अ डिफरेंट मैन। तो वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो रही है कि हाँ यार, ये इससे अलग भी है, correct. गुस्सा भी है, लेकिन कुछ और भी है इस इंसान में। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस is so much required for a woman because बहुत इमोशनली चार्ज्ड होती है women. I Yeah, think we're all wired like that yeah, कि feminine energies जो हैं एक फीमेल में क्योंकि ज्यादा होती हैं, तो they're more attached to those emotions. So if we understand that better, we can at least bring up our children in that manner. They will also learn from us. correct. तो उसका एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर एक वुमेन इज मोर इमोशनली इंटेलिजेंट इन द हाउस, आई दैट हाउस विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट ऑरा, Yeah, बिकॉज देन वो रिस्पॉन्स भी वैसे ही देगी और अपने आसपास लोगों को भी बैलेंस में रखेगी, आई थिंक। और males generally they have this thing that they are the bread earners of the house, so they have a say in the house, yeah, and they come and do whatever they feel like. They like हम राजा हैं यहाँ के, तो that is आप राजा हो, मना नहीं कर रहा कोई भी, बट राजा का मतलब ये नहीं है कि आप सब पे सबको डोमिनेट करो या रानी को भूल जाओ. रानी को भी भूल जाओ। तो एक वो सपोर्ट सिस्टम बनाना Yeah, और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का स्पेस क्रिएट करना, yeah, दैट कम्स विद इमोशनल इंटेलिजेंस। correct. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। Makes sense. So, what is the everyday tip which you would like to give to everyone that कि हाँ support system बनना है सबका और emotional intelligence gain करनी है
स्लोली इसको ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने, एंगर कब आ रहा है अपने को, सेल्फ डाउट कब आ रहा है, अपन सेल्फ एक्सप्रेशन कब नहीं कर पा रहे हैं। सो उन सारी हम्म फीलिंग्स को अपने को एनालाइज करना है और सबसे बात करनी है। इफ यू फील कि आपको किसी से प्रॉब्लम है, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है वो, तब जाके आप बात करिए। अगर सामने वाले को लग रही है तो आप जाके पीछे मत पड़िए, बिकॉज वो फिर उल्टा भी पड़ जाता है। इट्स अ रिएक्शन विच यू आर क्रिएटिंग देन। राइट, नहीं वहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर सामने वाले को कोई प्रॉब्लम है तो दैट्स हिज माइंड वर्किंग देयर। एग्जैक्टली। सो इफ ही इज वो परेशान है तो वो ही आके सामने से बात करे तो बेहतर करेक्ट। रहे। करेक्ट। बिकॉज आप, दिस इज नॉट माई बिजनेस कि मैं उसको जाके ठीक करूं, बिकॉज हमारे में वो उतनी पोटेंशियल नहीं है, राइट। वो स्किल्स नहीं है कि हम पोलाइटली फीडबैक या क्रिटिसिज्म भी ले लें, करेक्ट। है ना। और एज फार एज आपका क्वेश्चन जो कंसर्न है, वो मुझे ये लगता है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट होना। या। इमोशंस इमोशंस तो हैं, दिखते हैं, समझ आते हैं, बट स्टार्ट टेकिंग अ पॉज। आई थिंक पॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बच्चों को ईक्यू क्लासेस में भी यही सिखाते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो 10 सेकंड काउंट करो, 10 सेकंड्स काउंट करो, so that we make them do certain activities and that really helps them. या। तो ये तो अडल्ट्स के लिए तो वंडर्स ही होगा। अगर हम 10 सेकंड क्रॉस कर लें तो हमारे लेफ्ट ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग, the medulla oblongata will not have a impact on our emotions, कि जो या। past experiences है वो नहीं आएंगे फिर। करेक्ट। तो फर्स्ट टेक अ पॉज, एंड पॉज नहीं लिया जा रहा है तो सांस ही ले लो। वो तो करते ही हैं हम, 10 सेकंड नहीं गिन रखते तो सांस ले लो, सांस तो बहुत नेचुरल है, लंबी ले लो या। तो एक टाइम निकल जाता है उसमें। तो ये अपने क्लाइंट्स को भी मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप सांस ले लो लंबी, इट विल हेल्प यू। और वहाँ आप एक डिफरेंस देख पाओगे कि मैं पहले कैसे रिएक्ट करती थी और अब कैसे कर रही हूँ। करेक्ट। दोनों में डिफरेंस आ जाएगा अपने आप ही। एंड द सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट हम ना अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आई थिंक खुद के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी, दूसरों पे बिकॉज हम ब्लेम डालना बंद कर देंगे। हाँ, हाँ ब्लेम डालना बंद कर देंगे, राइट। तो कंप्लेनिंग भी कम हो जाएगी, ब्लेम भी कम हो जाएगा, तो सामने वाला भी खुश रहेगा कि यार पूरे टाइम कुछ करेक्ट। सुनना नहीं पड़ता। करेक्ट। ये See, इससे I think most of the times emotions generate होते हैं expectations से, either from ourselves or from others or from the universe. So वो emotions वहीं से खेल रहे हैं। We need to control those expectations, balance those expectations. कि daily mindful, जैसे I coach on daily mindfulness. जैसे I work on emotional intelligence, but it's good to know that how deeply it's getting resonated with everyone. Because I'm feeling lucky about myself that yes, I got attached to this feeling, and it's actually surrounded throughout in the world too, with all the living beings. And it makes me happy from inside. If right now, if we are recording this podcast too, it makes me feel a happy soul that we are doing this. At least we are talking about it. Nobody's talking, like people are talking about it, but so everybody has their own way of expressing. It's our unique way of doing these things, that we are talking to the people out there, who are struggling to find that emotional intelligence, जो आपने बताया कि डेली आपको प्रैक्टिस करनी है ये चीजें, एंड डेली के बेसिस पे ही होगा सब कुछ, right? The हाँ breathing, the pause which you mentioned, the 5 seconds or 10 seconds pause which you said, because I say that without knowing what the other person is trying to say, राइट, pause for 5 seconds. If you know what to say, go with a bang. It's fine. But if you don't know what to say, take a pause of 5 seconds. That will हाँ improve our like emotions, like the breathing. It will give us a space inside us to express and think about those emotions, what we need to say as well. एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। And with practice, what will happen? Those 5 seconds will get reduced to 1 second.
With Hmm. practice, it will reduce to Yeah. fractions, and you Right. will gain that momentum in your life that whatever you're saying, it's happening. Absolutely. It's That's true. creating those vibrations inside you. So it's all about practicing everything. So thank you so much for taking this question up. Now, the another question which I have, Madhulika, it's like, what are some key elements of a healthy and conscious relationship? Because you are a consciousness coach and you talk about like being conscious, right? Like the power is in the subconscious mind, but the actions would be done from the conscious mind only. Yeah. So I want to know, like are there some key elements which everybody needs to take care of for a healthy and conscious relationship living, and like how like they can improve their communication skills as well to build those stronger and healthier relationship, because everybody wants happiness. People get married because of happiness. They want it to be happy, right? Nobody Hmm. wants that trouble in their life. Hmm. Everybody wants to succeed in their lives, whether it's professional development or whether it's personal development, but it's all basis your personal growth only. When your True. personal growth is happening, your professional growth is automatically happening. You would feel that from inside. And I'm sure you would resonate to this question. So I would like you to answer this and make sure that it goes deep to the audience, because this is a most important question for maintaining the healthy relationships around us. It's not only about husband wife, it's about every Hmm. relation we're talking about. Right. Of course. Relationship is not just couples, husband, wife, or partners, but it's more than that. Everyone is involved. You have a relationship with your father, brother, sister, mother. Sabka alag alag hai, right? For a relationship, a healthy and long lasting relationship, the most important, as we discussed earlier, Hmm. was is communication. Correct. Communication and how transparent you are in that relationship. उस पे ही लेवल डिसाइड होता है कि आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा. Correct. ट्रस्ट भी उससे आएगा. आप उस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट भी उसी वे से करेंगे कि एंड ऑल्सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन योर लाइफ. कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्लोज रिलेशनशिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द पीपल हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू. Hmm. सो उस चीज को उसको आप मेंटेन करेंगे. एक कॉन्शियस एफर्ट है. हमारा क्या है कि रिलेशनशिप में हमारे नोबडी टीचर्स अस कि कैसे निभानी है Correct. और निभानी भी क्यों है. अपने आप सीख जाओगे, ऐसे हाँ. बोलते हैं. हाँ. और सीख ही रहे हैं. आई थिंक हम लोग सीख ही Yeah. रहे हैं इतने सालों से. फॉर मी, मैं अगर अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप के साथ बात करूं तो Hmm. वी had almost like it's completed 18 years. Wow. We got married 8.5 years ago. उससे पहले we were in a long distance relationship. The only thing that stood our relationship was the trust and the communication. No matter what, we had a good communication. एक space थी कुछ भी बोलने की एक दूसरे से. Yeah. So I think as you grow, relationship भी grow होता है. Yeah. Same तो नहीं रहता. एंड बिकॉज यू आर ऑल्सो चेंजिंग. आप 5 साल पहले कैसे थे, आज अलग हो. आपके व्यूज अलग हैं, बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं, चेंज हो जाते हैं. आप चेंज हो जाते हो लेकिन आपको नहीं पता सामने वाला कैसा है. आपको तो लगता है सामने वाला यार 5 साल पहले था वैसा ही होगा. हैजंट चेंज्ड बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं होती है, बीच में छूट जाती है. बिकॉज शादी हुए, यू गेट बिजी विद अदर थिंग्स एंड यू हैव किड्स, तो completely forget your relationship in that period, and it happens with most of the people. Correct. So एक लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के लिए टाइम निकालो. कुछ भी करो लेकिन टाइम निकालो. नॉट जस्ट रनिंग एरेंड्स की घर का काम काज कितना है और उस हिसाब से वो तो हम डेली बात कर लेते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, ऐसे 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 ऐसे. कई लोगों के पास उतना भी नहीं होता, वो टेक्स्ट पे बातें होती हैं. Yeah. और Corporate lives. हाँ, आजकल टेक्स्ट पे ब्रेकअप्स हो जाते हैं. हमारे And टाइम में तो हम लेटर लिखते थे. so true. व्हाट्सएप्स नहीं थे तब, कुछ नहीं था.
तो फोन पे बड़ी मुश्किल से ऐसे बात होती थी. तो यार, I think that time we had a different trust level. Now it's different. We have more insecurities and fears. Social media ke chalte, and our wants and needs have increased. And as we grow, हमारे थोड़े माइंडसेट्स डिफरेंट हो जाते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर के साथ इवॉल्व करो. सी, Yeah. लड़ाइयाँ होंगी, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू स्टेट वन थिंग दैट Yeah, yeah. आपने जैसे बोला हैप्पीनेस चाहिए सबको, किसी को भी नहीं चाहिए कि उसकी लाइफ में कुछ भी खराब हो. बट ऑनेस्टली, हैप्पीनेस इज नॉट अ गोल. Yeah. हाँ, लेकिन हमें यही सिखाया जाता है, खुश तुम रहोगे, खुश रहोगे, खुश रहोगे. या आप move ahead in your life, have a kid, you'll be better off. Those are just, taking away all the issues and putting under the carpet. आप खुशी is not the goal. The goal is to enjoy life with your husband or wife. To have a good experience. The goal is to enjoy a good relationship with your parents, your in-laws. Or if you want to be in a nuclear family, have a good relationship with Yeah. your own self. क्योंकि खुद के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो आपका आसपास भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा. Correct. You will be more calm and at peace and maybe more empathetic. Empathy अपने is बारे one में. thing which is required, like always. If you want to evolve in life, like empathy is required. And this is the first step of emotional intelligence. You need to Empathy. understand other emotional intelligence is not about regulating our emotions. Once you Hmm. understand others' emotions, you'll automatically regulate your emotions. Yes. So Yes. that's intelligence. Like for example, AI का जैसे अपन यूज में लेते हैं, हाँ. चैट जीपीटी हो गया, इतने Hmm. सारे टूल्स आ रहे हैं अब तो मार्केट के अंदर, बतेरे यूज में लो. हाँ. इंटेलिजेंस आपको एक्चुअली में अच्छा ही देगी. इफ यू यूजिंग दोस टूल्स एज वेल, वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे, आपको बुरा Hmm. रिजल्ट नहीं देंगे कभी भी. Hmm. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू अप्लाई दैट इंटेलिजेंस. Yes. Like it's up to us, right? Once we gain that power, like daily we need to apply that or not, it's our choice. Yeah. It depends on us, how we want to shape up our emotional journey with our like people around us. Like it's Hmm. up to us. Even with the nature, Hmm. I think we have a relationship with the nature too, right? Hmm. We have some responsibilities towards nature too, right? Because nature is seeing us. Like expectations तो हर जगह ही होती है. That's what you said. Expectations तो होगी. If the relationship is there, Hmm. expectations would be there. But Hmm. I consider it like this: that sun is there, right? It's giving us light. It's giving us everything. We are all sun and the moons and the stars of this particular planet, and we are revolving around those expectations. That what that power is giving us, Yeah. right? So we need to revolve around our expectations. We should not grab those expectations. Like that's what my take is, that we should not be like overwhelming me, overexposing ourselves, that yes I want this, yes I want this. Obviously affirmations करने हैं, law of attraction करना है, manifestation, सारी चीजें करनी है आपको. But it's, you need to revolve around that, and you will find that path of like it's spiral, which is coming in your world, and that will create the journey for you. Like it's a never ending spiral then. That's true. That's true. People say they know you should not expect. Yeah. But I also feel that expectations are also required Ah, so that you push yourself out of the comfort zone. correct. नहीं तो आप जैसे try to find balance in everything. I have a different view that अगर हम balance में ही रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ें? Yeah, We'll be very comfortable in that state कि balance है, अभी सब ठीक है. correct. But another theory, universal principle is that change is constant. Yeah, तो कॉन्स्टेंटली चेंज आएगा एनवायरमेंट में, सिचुएशंस में, आपके बिलीफ सिस्टम में, आपकी वैल्यूज में, तो क्लैशेस तो होंगे ही. correct. सो आई थिंक एंड थ्रू दोज क्लैशेस वी लर्न.
we learn something about ourselves, we learn something about our other person, and हम उसको कैसे rectify कर सकते हैं, Yeah. and where can we find joy? Yeah. I think वो joy तब आता है जब हम एक माइंड में बहुत clarity होती है about yourself. We stop victimizing ourselves Yeah. or stop blaming others uh, for everything happening in your own life. Yeah. So, healthy relationship, I feel, is that space where you create uh, your life. Like, आप Create your environment basically. create your environment. It's because Makes sense. Yeah. also a very important thing is that we allow people to treat us the way we want. Correct. So, आप क्या allow करना चाहते हो? How you want to be treated? Yeah. That's you. You are creating that. Makes sense. Makes sense. No, it definitely makes sense because it's only about like what we want from our lives, and that's a very good advice which you have given. So, like for a like what exactly one advice which you want to give for all the women out there who are making significant career changes, or they're entering into new phases of their lives, such as motherhood, or they're getting married, or कहीं college में admission हो रहा है, whatever Hmm. is happening, right, husband का transfer हो रहा है, anything can happen because women तो पीछे पीछे चल जाती है, right, Yeah. that's expected out of them. Yeah. Nobody thinks about their career role, and I'm sure this would get resonated with many of the women out there. So I would like to know from you, like like how one can stay resilient and adaptable during all these major life transitions which happens with everyone. I think majority of the women faces this issue, so I would like you to address this particular thing too. I think जैसे आपने बोला adaptable और flexible कैसे रहें, I think women are more conditioned to be Yeah. very adaptable to situations. Yeah. तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंट ना मान के या प्रायोरिटाइज ना करके अपने काम को अपने हस्बैंड के काम को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि ओके दैट इज बेटर देन Yeah. वी लेट्स गो वी कैन डू दिस आई कैन चेंज माय करियर या कुछ और कर लेंगे या जैसे भी है आई एम नॉट श्योर सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं आप एक्चुअली एज अ वुमेन हम अपनी सेल्फ वर्थ को एकदम गिरा देते हैं स्किल्स आप भूल जाते हैं आपकी कि आप क्या पोटेंशियल क्या है स्किल्स क्या है आपकी एंड सॉरी अविनाश क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था सी एक्चुअली में क्वेश्चन ये था कि जो एडवाइस आप एक देना चाहेंगे सारी वुमेन्स को आउट देयर हु आर मेकिंग दो सिग्निफिकेंट करियर चेंजेस और एनीथिंग हैपनिंग द मेजर लाइफ ट्रांजिशंस व्हिच वुमेन्स गो थ्रू. I think it's everyday part of their lives, right? Managing that, finding that inner peace, I would say. Because as you mentioned, obviously it's not about the happiness because we can't be happy all the time. Let me be honest and blunt about it. We can't be happy all the time. We need that peace, actually. Yeah. So, how one can find that inner peace in themselves during all these transitions? Because see, people will hear this. People will know about everything once they get into those problems, right? Without those problems, they won't be able to actually resonate what we are talking itself, right? Okay. So like during those transitions, what needs to be done, like for having that adaptable nature which you said that women are already adaptable, it's just that they need to be self-aware. Just take care of yourself and everything will get sorted. Yeah, absolutely. Like for mothers, women who are in this Yeah. transition, who are changing places or careers, और लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ गया है तो आई थिंक व्हाट वी मोस्ट फियर इज द अनसर्टेनिटी Yeah. कैसे होगा क्या करेंगे
For a mother, it's the feedback I'm getting and what I'm listening from other women are that they're not sure that uh, कि वो अपने बच्चे को भी पाल पाएंगे कि नहीं. आपको कौन सा कोई गन पॉइंट पे बोल रहा है कहीं नहीं जा सकते. विराट कोहली ने ये किया है, नॉट जस्ट बिकॉज सचिन तेंदुलकर ने किया है, सबने उनकी अपनी लाइफ जी है. फेवरेट बुक और पॉडकास्ट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, अपना ही बोल दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ. लाइफ आपकी है. आज वो कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे. इट्स ऑल अबाउट कि कौन से सिचुएशन के अंदर कौन सा सर आपका बाहर आ जाएगा. अब ऐसा होता है ना कि अपन गाड़ी लेके निकलते हैं हाईवे पे, जहां तक लाइट जाती है वहीं तक ही देख पाते हैं, आगे जाओगे तभी तो दिखेगा आगे भी. True. What is that one piece of advice which you would like to give me if I'm feeling overwhelmed, like from my life's demand? I can do more. And how can I do it? So there's something beyond the mind. If you did not go through that journey, you will not stand here where you are today. Yeah. We are lucky, at least we are sensing everything. Because as a man, उनको लगता है कि वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रेशर लेते रहते हैं और किसी को बोलते नहीं. Your journey is something which would actually get resonated with many of the women out there. Coming to the final section of our podcast, which is related to you, Madhulika, and like your journey, how you gained that emotional power to coach others. I feel that अगर ये सबको पता रहेगी तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी.